Hello, guys. Welcome to my blog, The Farming Buddy. एंड अभी जस्ट मैं ऑफिस से पहुंचा। आज थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि मैं मेरा जो फ़ोन है ना वो छूट गया था ऑफिस में। सो आई कॉल द ऑफिस बॉय एंड रिक्वेस्ट हिम यू स्टे देयर। आई जस्ट come back in half an hour and pick up my phone because phone is very important for me because uh, your clients call you anytime. So it is very important कि आपका फ़ोन आपके साथ होना चाहिए. Is all depend on the phone and connectivity. Connection without phone, your connectivity is break. So if the connectivity is break, so you whatever you want to do, in end of the day there is it is useless. So it is very important that you should always with your phone and it is always in working condition. और सुबह का काम था, कुछ क्लाइंटों को बात किया, एक दो कस्टमर को कोट किया प्राइस, एंड फिर प्राइस कोट करने के बाद उनका देखते हैं रिवर्ट मंडे तक आएगा क्योंकि सैटरडे संडे ऑलमोस्ट 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 फ्राइडे एंड सैटरडे बंद होता है। जितने मिडल ईस्ट हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गए, यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गई, तो दे आर ऑल क्लोज फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड जब आप इधर आएंगे, एशिया में आएंगे, जस्ट लाइक वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, चाइना, is Friday is working but Saturday Sunday is closed. So overall scenario is that you have to work from like Monday to last Thursday in a proper way, and 50% are break due to Friday and Saturday and 50% are break on Saturday and Sunday. So overall you check कि वैसे तो हमें 5 days वर्किंग है, लेकिन जनरली इट इज 4 days। और ऑलमोस्ट इस मंथ का तो सारा टारगेट पूरा हो गया था, एंड वी डू द गुड इन दिस मंथ, and for the next month we'll see how much query we have and how much we do the hard work for making the deal complete on a time. And आई थिंक यूएस के साथ काम चालू होगा अब, क्योंकि सेक्शन के वजह से काम थोड़ा स्लो था। लोग कर रहे थे लेकिन इट्स वेरी स्लो, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट द प्रोडक्ट यू हैव, क्योंकि यूएसए आल्सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो इंडियन प्रोडक्ट्स आर गोज देयर is like always cheaper than the US product. So we have to look on all the concern, like all their like this. I want to say that just like their mandatory things, there are so many mandatory things that the carbon chain are like hydrocarbons, and the chance would be between these and these, and epoxy content is between this and this. So we have to analyze is key what kind of material we have sent to them, and it is better than the US product. You have so many restrictions on the product and their guidelines. Guidelines should be matched for every time. So we have lots of range for the US, so we have don't worry about it anything, because we make the formulation according to EC, EU, and US based restrictions and some lab reports. The testing are very expensive in this case. Like one test goes like 1 lakh rupees for the one test. So during the during the like initial period, we have to test and set the parameters. We are going through this way, it is good, and according to that we can make the material like in the previous
to make the standard and make the material and send the material according to this way. अच्छा था काफ़ी, आज का दिन अच्छा था। कुछ क्लाइंटों से बात हुई, लाइक फिलीपींस में बात हुई, इंडोनेशिया में बात हुई, यूएई में बात हुई आज, और अमेरिका में भी एक क्लाइंट से बात हुई। So all the clients are happy with the feedback. Your material is good and the quality may be sustained like for the future also. So it is a great compliment for me and my company कि we are making such good product, and it's good. It's good. And just there is one mistake we have done yesterday, because we have sent a clients the material, their packing parameters are different. We send him the different parameters. So I talk and literally I little afraid with my HODs and my owner what I said, what I should tell him, what the blunder we are doing yesterday. So today I go in their office and suddenly they ask me why you are sad. My HOD told me, why you are sad, Satish? So I'm little afraid to tell you, and then suddenly I tell him, sir, we did a blender yesterday, and just I'm little afraid to tell you what should we do. So then they told me, what you doing, and their face are changed. So I told you, sir, the packing are different, packing parameter are different for this client, and we did the different parameters. So what should I tell? Should I mail that customer or wait for the material reach and then we'll told him this is our mistake? So my HOD told me that wait, go the material, if the clients told anything then we'll say this is mistake from our plant, so we can manage in the future orders with you. In this case what happens, some client understand some mistakes are taken in the working, some clients are rigid. The problem in export customer are, there some customer are very rigid. They not they work on like in a disciplined manner. They are very disciplined actually. For the we compare with the Indians and other country people work, so their discipline are very what happened in India, people are doing कि like मुझे ये पूरा करना है, कैसे भी पूरा करना है उसको, जस्ट लाइक इफ वी हैव अ टारगेट ऑफ समथिंग, सो मुझे वो टारगेट पूरा करना है। अब वो टारगेट मैं कैसे भी पूरा करूँ। For the medium scale company there is so many company also in India, they are having some rules like, and they have some other department, they are going through that process, like European countries, like Asian countries also doing the same way. लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि बाहर के जो लोग होते हैं बहुत अपने सिस्टम में, दे आर डूइंग वेरी स्लो कंपेयर टू अस। वी आर डूइंग कि मतलब हमें ये काम करना है, कैसे भी करना है, रात को 9 बजे भी करना है, 10 बजे करना है, 12 बजे भी करना है, मतलब 24 घंटे में करना है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम 24 घंटे काम करके इस काम को आज का आज कंप्लीट कर दिए तो वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। एक तरह की स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि हाँ कि भाई मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ इस काम के लिए, मेरी इफिशियंसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे लोग क्या करते हैं, वो अपना काम जो होता है अपने वर्किंग आवर में करते हैं, रेस्ट उसके बाद नहीं, फिर अगले दिन काम करेंगे। सो इफ यू कंपेयर द बोथ, आपको लगेगा कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन दे वर्क इन इफिशियंसी वे, they have to complete in their work in 8 hour. what happened with us कि हम 8 घंटे में तो कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम उसको 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक ले जा रहे हैं, 3 बजे तक ले जा रहे हैं, अगले दिन ले जा रहे हैं। तो हमें क्या फील होता है कि यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग अनदर थिंग एंड वर्क इज अनदर थिंग। I think you have very hard working for your, and you are very sincere for your work, but वो चीज़ 8 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द
द सिस्टम, कि अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है उस पर्टिकुलर 8 घंटे में हो जाना चाहिए, देन योर एफिशिएंसी इज गुड। जस्ट लाइक आप काम तो कर ही रहे हैं, नो डाउट, आप मेहनत भी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आपका काम 8 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इफिशियंसी 8 घंटे की नहीं है, आप उस काम को 10 घंटे में कर रहे हैं। कुछ लोग 10 घंटे में कर लेते हैं, कुछ लोग 12 घंटे में कर लेते हैं, कुछ लोग 16 घंटे में कर रहे हैं, कुछ लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। एंड कुछ लोग जो है अपना काम 8 से 8 घंटे कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक साइकोलॉजी भी होती है ना, ऑफिस की साइकोलॉजी भी होती है कि भाई ये तो 9 बजे आता है करेक्ट टाइम पे और 6 बजे निकल जाता है और अपना काम इतने ही में करता है, इसके बाद काम ही नहीं करता है। लेकिन भाई उसकी इफिशियंसी तो देखो, वो 8 घंटे में तुमसे ज़्यादा काम कर लिया। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फॉर द करियर ऑफ माई दिस इन द टेक्निकल सेल्स आई एम लुकिंग दिस, कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट की इफिशियंसी अलग होती है जब आप प्लांट में काम करते हैं, जब आप सेल्स में काम करते हैं तो आपकी इफिशियंसी अलग होना चाहिए, आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए, एंड आपकी एक्टिवनेस अलग होनी चाहिए, एंड आपका एनर्जी अलग होनी चाहिए। द फॉर द प्लांट you do the hard work, you do the smart work. For the sales, you have to active always, and you have to always 2 step front from your competitor, so you are going to make your career good in this field. So sales का लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट हफ्ते मेरे को मेरे जो है चोडी हैं और मेरे जो ओनर है मेरे को डांट रहे थे, यार तेरी तू कैसे काम कर रहा है, इतना लेजीनेस होके काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। सो दे टोल्ड मी कि सतीश, सेल्स में, टेक्निकल सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप 2 कदम आगे होना चाहिए हमेशा। आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि भाई मैं इस कंट्री में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस कंट्री में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एंड दिस कंट्री में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरा जो कस्टमर है लास्ट 2-3 महीनों से किस रेट में प्राइस लिया, मेरे से नहीं लिया तो किससे लिया। सो उस दिन मैं आपको बिलीव नहीं करेंगे, यू जस्ट नॉट ट्रस्ट मी कि मेरा माइंड इज ओपन ऑन दैट डे कि लाइक वी आई हैव टू थिंक लाइक दैट। इफ आई एम थिंक लाइक दैट तो देर इज नथिंग इन सेल्स। और आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग और आपकी जो सोचने का तरीका, लाइक थिंकिंग एबिलिटी, listening ability is going so far and your career is going so far.